हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट शेल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम मिठाई के बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं होम डेकोर के लिए। एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज़ दीज काइंड ऑफ मिठाई बॉक्सेस इन स्टोर। मेरे पास यहाँ पे 5 सेम साइज़ के बॉक्सेस हैं। आप चाहें तो डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। इन मिठाई के बॉक्सेस को हम झरोका शेप में कट करने वाले हैं। यूनिफॉर्म साइज़ के लिए हम सबसे पहले एक पेपर पर झरोका कटआउट बना लेंगे। टेक अ ब्लैंक पेपर, फोल्ड इट एंड मेक द डिज़ाइन ऑफ झरोका। कट इट नाइसली। And our झरोका design is ready. Now what you have to do is place the cutout on the mithai box, trace the design and then cut it. You have to do the same process on other boxes also. हमारा मिठाई बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। Repeat the same process with other boxes also and then we have to paint it. So here I am using white spray paint to cover the boxes. Also आप चाहें तो acrylic paint या फिर poster colors भी use कर सकते हैं। There are some instructions which you should follow while using spray paint. So do read them carefully. I let them dry for 4 to 5 hours and it looks something like this after drying. I want these झरोका frames in multicolor, so here I have used different colored A4 size papers. I have cut them in size of the mithai box. Now all you have to do is stick the papers inside the mithai box, something like this. Do the same with other boxes also. आउटलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम कलर्ड पेपर के थिन स्ट्राइप्स कट कर लिए हैं। ऑल्सो आप चाहें तो यहाँ पे स्केच पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। Simply stick the paper stripes all around the box with the help of glue. And now we will be using mirrors to decorate the झरोका. These days mirrors are really trending for home decor purpose. And again with the help of glue, stick the mirrors in uniform gap around the झरोका frame.
after making design with different sized mirrors, I'll be using ceramic cones to make the outlining and other designing part. You can also use Fevicryls outliners, ready-made outliners. You don't have to make it at home. Now you can make any design of your choice. I want to give it a traditional look, so that's why I'm doing the mandala kind of designs. Repeat the same process with other boxes also. I have kept the design uniform for all the boxes. And these Jharoka frames are ready to make my white boring walls interesting and colorful. So with the help of double-sided tape, you can stick them on the wall. Also you can place some hook behind the Mithai box, but I stick them with the help of double-sided tape only. Do try this super easy home decor project and let me know in the comment section below if you loved it. Also, if you have any queries, then do let me know in the comment section below. I would love to answer you all. Thank you for watching the video.